कुछ 7टा से पड़े अच्छे well welcome to all of you to this YouTube session and I hope all of you are doing well for your prelim examinations बहुत सारा पाठ बहुत सारा करी सारी बनी तुम्हें एंड रेडी थिबो नहीं कि बहुत सारा रिस्क अच्छी तुम ऊपर प्रिलिम पे बहुत सारा रिस्क अच्छी ठीक अच्छी होप कि ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल भलसे पढ़ा भलसे ये करो कैरियर बना ठीक अच्छी एवं अड्डा 247 ओपीएससी इज ऑलवेज विथ यू दैट्स ए वर्ड फ्रॉम मी ठीक अच्छी तो बहुत सारा हमें करिचे कोन बहुत सारा मैराथन करिचे तो कमेंट रे लिखिबो कि अड्डा 247 रो कंट्रीब्यूशन अछि कि नहीं तुमर कैरियर बिल्डिंग पई बेसिकली जो अपकमिंग प्रिलिम पई हमें विभिन्न वे रे विभिन्न माध्यम रे तुम मन पाखु विभिन्न प्रकार डाटा आउछु एंड दैट इज क्वाइट ऑथेंटिक क्वाइट रिलेवेंट ठीक अच्छी सब चोजेन डाटा जोटा कि तुम दरकार हुए बा जोटा कंफ्यूजिंग एरिया रही बेसिकली जोगरा ये अच्छी पिला ने कही दिए कि शनिवार दिन आमर पुणी गोटे फाइनल माराथन हम से भी कोटा बहुत चोजेन क्वेश्चन गुरा ओपीएससी प्रिलिमिनरी जो 27 रे अच्छी तापाई बहुत चोजेन क्वेश्चन रहिबो सो शनिवार दिन जॉइन करिवो 3टा बेलटू जॉइन करिवो सेटा गोटे माराथन रहिबो सब एरिया रो बा सब सब्जेक्ट ऊपर पॉसिबल क्वेश्चन फाइनल गोटे टॉस दबा हमें ठीक अच्छी तो आम तो बहुत सारा कोशिश करी आसीचु कि पॉसिबल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रे पिला मानन को हेल्पफुल हो एवं होप करूची कि प्रिलिमिनरी जेंटल हेल्पफुल हो ये सेशन टा तुम पई तो आज सेति पई तुमको मु गोटे बेसिक जिंस आनीची जोटा बेसिकली यूज रहे आर्टिकल्स ऊपर तो माने इंपोर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर मु आनीची आरंभ कर दो डायरेक्ट बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस भलसे पढ़ो आमे पढ़िबा तो बढ़िबा ठीक अच्छी तो जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अच्छी सेटा नहीं आस समस्ते पढ़िबा और समस्ते बढ़िबा आज रेस्ट्रिक्शन किछि नहीं का पई जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे समस्ते हमें सब किछि बनि परिबा तेणु ता पई थिला जो गोटे प्रॉब्लम थिला कि पैसा पत्र प्रॉब्लम कोचिंग एते एक्सपेंसिव ऑफलाइन कोचिंग नहीं बहुत सारा जगह रे बड़ बड़ शहर रे रही तो बेसिकली अफोर्ड करिबा ठीक नुह भी से क्वालिटी रो सेम क्वालिटी रो एजुकेशन सेम क्वालिटी रो कोचिंग अड्डा 247 ओपीएससी प्लेटफॉर्म रे अवेलेबल होउछ तो से माने आमे आसी पढौछु तेनु सेति पे तुम भाई गोटे बहुत बड़ ग्रीन सिग्नल अछि तेनु जो माने भी आशा रखिछो कि ऑफिसर हबो एडमिनिस्ट्रेटर हबो सिविल सर्वेंट हबो पई तुम पई ए प्लेटफॉर्म टा बहुत सुटेबल हबो ए कथा मु आज तुमको क्लियर कर दूछि ठीक अच्छी तो एमती आम बहुत सारा आनी मु आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट भी आनी थी आज इंपोर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर मु नहीं के ठीक है पे स्टार्ट करवा ओपीएससी मंजिल ओपीएससी प्रिलिम्स 2024 आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर आनिबा हमें तो आरंभ करवा हमें articles important articles of the governor Raj Bhavan of Odisha the pinnacle of constitutional government is here at Raj Bhavan of Odisha then it is be free of rent governor को दिया जाए Raj Bhavan of Odisha every state has Raj Bhavan तो पैलेसियल बिल्डिंग तेणु सी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति जमती देशर सर्वोच्च संवैधानिक मुख्य सेमती गवर्नर होउचंती राज्यर सर्वोच्च संवैधानिक मुख्य एवं सेम पैटर्न पार्लियामेंटरी पैटर्न रे गवर्नर होउचंती नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बा नामको मात्र एग्जीक्यूटिव से तेणु से सेरिमोनियल हेड फिर भी जो गवर्नर पोजिशन बहुत माने रही इम्पोर्टेंस रही अवस्थिति बा जो व्यवस्था कराई संविधान रे सेटा किछि गोटे रिडंडेंट नुह एवं बहुत सारा कमिशन आरएस सरकारिया कमिशन एमएम पुंची कमिशन वेंकटचेलिया कमिशन इवन द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन जोटा रिपोर्ट एवं कनसीडर होची 2010 रे से रिपोर्ट देथिले बट एबे सेटा कंसीडरेशन को आसुची तो समस्त जेते भी कमिशन सेंटर स्टेट रिलेशन ऊपर होंतु कि प्रशासनिक संस्कार ऊपर होंतु समस्त गवर्नर ऑफिस को स्ट्रेंथन करिया पे रेकमेंड करचंती केही भी तार एबोलिशन पई बा इरेलेवेंट बेली कहिनांती त माने एथरु आमे कंक्लूजन नबा कि गवर्नर ऑफिस इज ए क्वाइट एसेंशियल पॉलिटिकल ऑफिस इन द कंट्री इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एट द स्टेट लेवल and governor
is governor is namaskar namaskar बढ़िया अच्छी किशोर बढ़िया अच्छी and I hope you are fine and you will be doing well ठीक अच्छी तो आरंभ करिबा आज गवर्नर तो कहली संवैधानिक मुख्य सी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तेनु कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को हमें रेस्पेक्ट दबा तो he is the he or she is the constitutional head of a state. He or she has dual functions. Do you know what is dual function of the governor? Dual function माने कौन गवर्नर रो dual function कहले हम कौन बुझिबा पलाने गवर्नर रो dual function हला गोटे होचंती से कौन constitutional head of the state by head of the state से constitutional head of a state आ गोटे हला कौन ना representative of the center representative by agent of the center. He also works on behalf of the central government. He watches the government of the state function in a constitutional manner. नहीं आर्टिकल 356 टा कौन पे दिया है आर्टिकल 355 356 एगुरा सब से पे दिया है कि जे गवर्नर देखिबे कि राज्य सरकार इज रनिंग इन अकॉर्डेंस विथ द कॉन्स्टिट्यूशन यदि if there is a breakdown of constitution, if there is a breakdown of constitutionalism at the state, then the governor can recommend to the president for imposition of president's rule. ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା କହା ଯାଏ ଦ୍ୱୈତ ଭୂମିକା ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭୂମିକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର କଣ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟର ଠିକ ଅଛି ऊपर कहि दी पैराडोनिंग पार्ट कहबी रह पैराडोनिंग एथरे तो अछि हम डायरेक्ट पळे आसे एटा YouTube सेशन अछि त हम डायरेक्ट पळे आसे आर्टिकल को प्लाने किछि किछि मु एटा तुमको गोटे कोन हाइलाइट दउछु मु कारण एगुरा YouTube सेशन तुमे जेतेबेले मु आरंभ करबी कोन पॉलिटी पे स्पेशल प्रिलिमिनरी रो बैच आरंभ करबी जोटा केते 1999 अछि 1999 टंका रखाई छी प्रिलिम पई खाली पॉलिटी रो पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ तुमरो राइट्स इश्यू पब्लिक पॉलिसी पंचायत राज जो प्रिलिम सिलेबस सेट पे गोटे बैच मु आरंभ करबी मेंस पे जीएस 2 जोटा अछि ता पे गोटे स्पेशल बैच आरंभ हो ठीक अछि तो सेतिरे हमें डिटेल जिबा एबे हमें गोटे सरफेस वैल्यू नउचे ठीक अछि मु पैराडोनिंग पर कहबी तो प्लाने जोटा अछि हमरो गवर्नर एक्चुअली जो स्टेट पार्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव हमें कहूचे स्टेट एग्जीक्यूटिव कोथरे अछि स्टेट एग्जीक्यूटिव है पार्ट 6 आर्टिकल 152 रु 167 नहीं कि एटा होची स्टेट एग्जीक्यूटिव तो गवर्नर 152 टा होची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट 152 टा ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट 53 रे कहूची आर्टिकल 153 कहूची आर्टिकल 153 कहूची देयर शैल बी ए गवर्नर there shall be a governor for each state लाला आपरे क्वेश्चन नहीं परिबो आपरे कोन क्वेश्चन नहीं परिबो को जरा पचारिबो कि को अमेंडमेंट रे 153 अमेंड हेतला को अमेंडमेंट रे आर्टिकल 153 अमेंड हेछि को अमेंडमेंट रे ऐड हेछि ये जो 153 आर्टिकल टा को अमेंडमेंट रे ऐड हेछि बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 रे अमेंड हेछि आर्टिकल कोन अमेंड हेछि को एटा अमेंड हेछि कोन आगुरु थिला देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट एबे सेटा कराला कोन ना 56 रे कोन करागला ना गवर्नर रही परिबे कोन गवर्नर रही परिबे गोटे जणे लोक दुई किबा ततोधिक राज्यर गवर्नर रही परिबो ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 or more states simultaneously and if a person is appointed the governor of 2 or more states simultaneously then the salary will not be different the salary will be same and the salary will be shared among the state
as decided by the president. अर्थ गवर्नर जदि दुई किंबा ततोधिक राज्य दायित्व रे रहंती जणे लोक ताल ताको दरमा अपरिवर्तनीय रहइबो, दरमा सेम रहइबो। गवर्नर को दरमा केते? What is the salary of governor at present? 3.5 lakh, 3,50,000 टंका। तो 3,50,000 टंका टा जेतिकी राज्य रे से गवर्नर हेबे सेतिकी राज्य बांटी की देबे। That will be shared among the states. तो किए केते दबो सेटा that will be decided by the president। ठीक अछि? तो that is तो जेटा दीटा कि मैं ततोधिक राज्य भी परिबो। ठीक अछि? तो that is why a person can be appointed as the governor of two or more states simultaneously. Just look at it. And when a person is appointed as the governor of two or more states simultaneously, his salary remains constant. He gets the same salary, but the salary is decided by, but shared by the among the states by as determined by the president. एवं कह जे गवर्नर सैलरी कोटू आसे माने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ना कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट ना नॉन ऑफ द अबव। आंसर रे मते कह कोटू आसीबो गवर्नर। ठीक अछि? तापर आसीबा आर्टिकल 154 executive power of the state shall be vested in the governor। এটা parallel article कोडा parallel article होची 74 प्रेसिडेंट करो जेमती तुमरो अछि 74 रे देयर शैल बी 70 जोटा सॉरी हमर भूल कहि देली तुमको 53 रे जो अछि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर शैल बी vested in the president। सेमती एटा केते 154 जहा 53 सही है। 53 टा प्रेसिडेंट करो 154 टा गवर्नर। एटा कोन ना सरकारी क्षमता गवर्नर को ऊपर रहिबो, गवर्नर को दिया जाइछि एवं गवर्नर ताकू एग्जीक्यूटिव बा जो ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम सेटा ताकू कैरी करिवे। से 154 टा होची 54 टा होची एग्जीक्यूटिव पावर इन द गवर्नर। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। Appointment of the governor. Governor is appointed by whom? Governor is appointed by the president and on the advice of the prime minister. Governor is appointed by the president on the advice of the prime minister, and he does so also while doing the appointment he consults the chief minister of the state also, but on the advice of the prime minister, not on the advice of the chief minister, but chief minister may be consulted after सरकारिया commission report recommendation हला जो 1988 रे जो recommend कला से सेते परे गवर्नर जेतेबे अपॉइंटमेंट होंती सेतेबे चीफ मिनिस्टर भी कंसल्ट करा जाऊ। एटा कराइछि केडा एटा से जो ईयर कराइछि एटा 155 पहला अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट 156 आर्टिकल 156 term of the governor। यानी term of the governor is fixed or not fixed? Does governor enjoy security of tenure? No, governor does not enjoy security of tenure. Governor holds office during the pleasure of the president.
गवर्नर राज्य राष्ट्रपति प्लेजर रे थांते अर्थात प्रेसिडेंट कैन रिमूव द गवर्नर एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन ताको कहते डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जोटा सिविल सर्विस मानकर भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर 310 आर्टिकल सेमती आकर होची प्लेजर टा कोन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जोटा कहती पॉलिटिकल प्लेजर जो अच्छी गवर्नर प्रेसिडेंट रो सेटा गवर्नर होंतु गवर्नर सेटा कौन राष्ट्रपति प्लेजर रे थांती अर्थात राष्ट्रपति जेतेबेले चाहिए गवर्नर को बाहर कर दे परिबे दैट इज कॉल्ड प्लेजर सेटा दी प्रकार अछि उटे सिविल सर्विस मानो पे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अछि दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो ऑल इंडिया सर्विस है सिविल सर्विस है सेमती स्टेट सिविल सर्वेंट माने दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर सेमती गवर्नर holds office during the pleasure of the president after he can be removed tamane governor does not have a security of tenure but he holds office for 5 years he holds office for 5 years that is the term but remember he does not have security of tenure another thing is can he go beyond the term 5 वर्ष धर पूरी गला गवर्नर धर जने अच्छी 5 वर्ष सरी गला ताले गवर्नर 5 वर्ष जो दिन सरीबो इमीडिएट पळे आसीबे वैकेट करिवे ना कंटिन्यू करिवे इफ द सक्सेसर हैज नॉट अज्यूम्ड ऑफिस ता अर्थ जदी आउ जे गवर्नर हबो जदी से आसी जॉइन करि नाहंती ताले से अपेक्षा करियो काई कह कारण देयर विल बी नो unreasonable vacancy in the office of the highest constitutional office in the office of the governor that is the highest constitutional तेणु गवर्नर कर ऑफिस रे कोनसी अवास्तव वैकेंसी रही परिबो जदी गवर्नर अपॉइंटमेंट हेई नांती ताले पूर्व जो माने एग्जिस्टिंग गवर्नर से दे विल कंटिन्यू सेटा भी एक प्रोविजन पिला माने that the governor shall continue until the successor माने कोन तांको परे जे आसीबो has not assumed office assumed assumed office बुझियला so that is called your what that is called your term of office then article 157 plan 157 होची qualifications for the appointment of governor तमाने 157 रे क्वालिफिकेशन अच्छी गवर्नर जेमती 58 रे प्रेसिडेंट को क्वालिफिकेशन अच्छी सेमती 157 रे गवर्नर को क्वालिफिकेशन प्लान गवर्नर को क्वालिफिकेशन कौन गवर्नर को क्वालिफिकेशन है ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एवं से 35 वर्ष किंबा तदुर्ध होइतिबे ही शुड हैव अटेन 35 इयर्स ऑफ एज एवं कौन he should not have held any office of profit प्लान तीनटा क्वालिफिकेशन मेन गोटे है भारत नागरिक होइतिबे 35 वर्ष पूर्ण होइतिबो एवं से कोनोसी सरकारी लाभदायक संस्था जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इंग्लिश रे कहती सेटा नथि परे सरकारी कमिशन कहिछि कि गवर्नर शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट इन व्हिच ही इज अपॉइंटेड गवर्नर सही राज्यर बासिंदा ही नथिबे जो राज्य रे से अपॉइंटमेंट होती एटा सरकारी कमिशन रिकमेंडेशन रे एटा गोटे कन्वेंशन कहती परंपरा एटा कॉन्स्टिट्यूशन रे नाहंती बुझिबो तो क्वेश्चन एमती भी पारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर त माने कॉन्स्टिट्यूशन रे तीनटा कथा अछि गोटे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नथिबो आ गोटे भारत रो नागरिक हेतिबे आ गोटे 35 वर्ष किबा तदुर्ध हेतिबे किंतु गवर्नर जेतेबेले अपॉइंटमेंट हेबे से सही राज्य रो हेबे नहीं एकता सरकारी कमिशन रिकमेंडेशन 1988 परे एटा रिकमेंड एटा इंप्लीमेंट करा होउची तेन सेटा गोटे अलग कथा सेटा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहे ठीक है एटा होला 157 देखिलो 157 शॉर्ट रे मन रखो क्वालिफिकेशंस एटा होला टर्म 56 होला टर्म आसीबा तापरे 158 लाने कंडीशंस ऑफ जोटा प्रेसिडेंट को रहउची केते 59 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस कंडीशन माने कोन तांकर सैलरी it should be provided with
कौन हाउस रेंट गवर्नर्स हाउस विदाउट रेंट विदाउट पेइंग द रेंट तांको गोटे ऑफिशियल बा सरकारी बासभवन दिया जीवो विदाउट रेंट रे सेटा गोटे कंडीशन आउट हला तांकर सैलरीज गुरा पार्लियामेंट डिटरमाइन करिवो एवं सैलरीज गुरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट बा स्टेट्स रे चार्ज एक्सपेंडिचर हो अर्थात तांकर सर दरमा कमे हबनी चार्ज एक्सपेंडिचर माने कोन पार्लियामेंट रे जो बजेट पास हुए बा जो स्टेट रे जो बजेट पास हुए से जो एक्सपेंडिचर गुरा थाए जोटा हम राजकोष जो पैसा आसे से दी प्रकार थाए गोटे भोटेबल एक्सपेंडिचर आ गोटे नॉन भोटेबल एक्सपेंडिचर नॉन भोटेबल माने ताकू पार्लियामेंट किबा विधानसभा कमई परिबेन सेटा कहती चार्ज CHARGED चार्ज एक्सपेंडिचर तेणु सेटा गवर्नर को दरमाटा होची चार्ज एक्सपेंडिचर अर्थात जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट रू जो आसे सेटा कौन चार्जेबल बा नॉन वोटेबल इन नेचर सेटा होची 158 कंडीशन सो दीज आर कॉल्ड द कंडीशंस ऑफ ऑफिस ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी देइछंदी गोटे बा से माने कौन से माने कोनोसी प्रकार दरमा तांकर कमी पारिबनी एगुरा सब कोन ऑफिशियल रेसिडेंस दिया जीव सेटा कोनती कंडीशन एटा सेम जो रेलेवेंट आर्टिकल प्रेसिडेंट रे कोन 59 कंडीशंस ठीक अछि तापर आसीबा 159 oath or affirmation oath or affirmation of the governor do you know who administers oath to the governor गवर्नर को को माने ओथ दियंती द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और एनी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम हाई कोर्ट अवेलेबल एट दैट टाइम तेणु गवर्नर को सेही राज्यर हाई कोर्ट रो मुख्य विचारपति शपथ पाठ करे थांती एवं जदि से राज्यर अधिकारी बा मुख्य विचारपति नथिबे ताले सेटा कौन से जो हाईकोर्ट रो जे सीनियर मोस्ट जज से शपथ ग्रहण बा शपथ देबे काकू गवर्नर को एवं गवर्नर पाखापाखि प्रेसिडेंट कर भलिया सिमिलर ओथ नियंती टू रिमेन फेथफुल रहिबा बा कॉन्स्टिट्यूशन टू को फुलफिल करिबा एवं टू कौन लोक मानकर आस्था भाजन हबा टू सर्व पीपल विदाउट एनी बायस विदाउट एनी फियर नेपोटिज्म तो बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट माने मानकर ओथ गुरा डिफरेंट था ओथ ऊपर भी गोटे क्लास करिबा कौन कौन कहार ओथ अछि सेटा मु तुमको देखै देबी ठीक अछि 160 होची contingencies governors function in certain contingencies बा जरूरीकालीन परिस्थिति रे से कौन कौन कर्तव्य निर्वाह करिवे सेटा प्रेसिडेंट डायरेक्ट करंती सेटा होची कहंती डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसी फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट रूल बेले तेनु सेटा राष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट रो डायरेक्शन रे से काम करन सेटा कहंती गवर्नर्स रोल इन सर्टेन कंटिजेंसीज ठीक अछि तापर आसीबा गवर्नर रो मेजर जोटा अछि 161 जोटा पचारथला 161 power of governor to grant pardon, commutation, remission, respite, reprieve ताले गवर्नर को ऊपर ग्रांट देबे काउ मन को देबे जो माने स्टेट लॉ अंडर रे कन्विक्ट हेतिबे स्टेट स्पेसिफिक लॉ अंडर जो माने कन्विक्ट सेंट्रल लॉ बा जोडा सब नेशनल लॉ अंडर रे कन्विक्ट हेले सेटा कन्विक्ट हेले सेटा राष्ट्रपति पार्डन देबे हला सी गोटे कथा गवर्नर पार्डन देबे कहा परे ना जदी व्यक्तिटा स्टेट लॉ अंडर रे कन्विक्ट हेतिबो
धर ओडिशा पुलिस एक्ट है, ओडिशा पंचायत राज एक्ट है, ओडिशा मिनरल माइंस एक्ट है, ता अंडर बहुत बार ओडिशा धर किसी मैरेज एक्ट है कि कौटसी गोटे सिटीजन मान जो एक्ट अच्छी भायोलेट कले यही दंड मिल जदि लोकटा कन्विक्ट हो हाईकोर्ट दोष देथिबो हाईकोर्ट दंडित करथिबो बा जिला कोर्ट दंडित करथिबो ताले से गवर्नर को पार्डन मांगिबो किंतु पिलाने गवर्नर जो पार्डन देबे से मृत्युदंड रे पार्डन दे परिबे पार्डन माने कौन पार्डन माने होची कोसी अदालतर दंडरू मुक्ति दिया जाए लोक को कहीं ना जुडिशियरी बेस्ड अपॉन एविडेंस तेणु जुडिशियरी जेहेतु साक्षी प्रमाण उपर बेस करे बेले बेले मिथ्या साक्षी बा मिथ्या प्रमाण अनुसार गोटे निर्दोष लोक भी दोषी साब्यस्त हो पारे तेणु से सब जिनस गुरा लॉ इज ब्लाइंड भी कह जाए कारण आईन अंध कहीं कह जाए कारण आईन देखिबनी तू किए आईन देखिबनी तू माने लेम कि ब्लाइंड छोटा अंध कि केम्पा कुजा तू कौन भी हो जहाँ क्राइम करथिबो से अनुसार तो दंड मिलिबो तेणु राष्ट्रपति से रेस्पाइट भी दियंती कारण जदि गोटे शारीरिक विकलांग लोक को जदि गोटे किसी सश्रम कारादंड दिया जाइछि ताले से राष्ट्रपति बा गवर्नर को कौन क्षमा प्रार्थना करे कि मते ए जो दंडरू कोहल करा जाओ तेणु से दंड व्यवस्था अच्छी पार्डनिंग पावरटा प्राय देश में रही तेणु यहाँ गोटे एक्जिक्यूटिव गोटे स्पेशल पावर तेणु राजक्षमा को राजक्षमा देवा कहती तेणु यहाँ गोटे मर्सी पिटिशन माध्यम दि जाए तेणु गवर्नर सबू दे पारे किंतु ही कैन नॉट ग्रांट पार्डन ऑन डेथ सेंटेंस टा केवल प्रेसिडेंट दे पारे हाँ 72 अंडर जो अच्छी राष्ट्रपति पार्डनिंग पावर तेणु से द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज वाइडर देन दैट ऑफ द गवर्नर कारण प्रेसिडेंट सारा देशर सेंट्रल लॉ गुरा हला कि अन्य सब लॉ जो रही दियंती स्टेट गवर्नर केवल स्टेट लॉ पर कन्विक्ट हेले दियंती 161 तो एगुरा होची मेन आर्टिकल जोटा गवर्नर आमे देखिले गवर्नर जोटा मेन आर्टिकल तापरे मेजर आसीबो जोटा अच्छी हमरो कौन 174 नबा ता भितर आउ सब आर्टिकल जोड़ा रोचे स्टेट मिनिस्टर मान पे रोची तेणु आर्टिकल 174 नबा सेशंस ऑफ इन द स्टेट लेजिस्लेचर एटा गवर्नर कहीं रिलेटेड अच्छी ना गवर्नर विल समन द सेशन तेणु जो समनिंग प्रोरोगिंग ये जो जिनस अच्छी समन और प्रोरोग माने बुझी परछो समन माने सेशन आरंभ करेबा आउ जो कौन प्रोरोग माने सेशन एंड करेबा तेणु सेटा गवर्नर करेबे 85 जहा एटी 174 से 85 अंडर प्रेसिडेंट कर समन पावर अच्छी पार्लियामेंट जो सेशन हुए सेमती विधानसभा आमर सेशन होची शीतकालीन सेशन अधिवेशन वर्षाकालीन अधिवेशन बजेट अधिवेशन शुणी पार्छ ना नहीं पेपर रे सब बाहर तो बजेट अधिवेशन है कि वर्षाकालीन अधिवेशन मनसून सेशन है कि विंटर सेशन जो शीतकालीन अधिवेशन यहाँ को डाकिबे ऑफिशियली किए गवर्नर सेटा कहती समन आउ एंड करिवो किए गवर्नर सेटा कहती समन और सेशन तापर डिजॉल्व भी हबो डिजॉल्विंग द डिजोल्यूशन ऑफ व्हाट डिजोल्यूशन ऑफ एसएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तेणु राज्य विधानसभा को भांगी देवार काम भी गवर्नर कर अछि गवर्नर केते बळे भांगी परिबे ना ऑन द एडवाइस ऑफ द कोन चीफ मिनिस्टर but governor can also dissolve the state legislative assembly if no confidence motion is passed by the state legislative assembly against the government तेणु सरकार विरुद्ध रे यदि अनास्था प्रस्ताव पास हो गला ताले गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजॉल्व कर दे पारंती नले हंग असेंबली हेले यदि कोनोसी पार्टी डज नॉट is not able to collect the majority that is required to continue the government, to establish the government at the state level, then the governor can dissolve the assembly and declare fresh election. The governor dissolution of the assembly not only on the advice of the chief minister or council of minister, but on his discretion भी use करी परिबे सेटा कोंती discretion इच्छा
तेणु गवर्नर दुईटा कहीपर इच्छा भी डिजल्व करें कि सर्कमस्टांसेस आउ ना ऑन द एडवाइस ऑफ द से 174 टा गवर्नर रिलेटेड आर्टिकल टा ठीक अच्छे। नेक्स्ट है कौन ना जोटा आम रखा 175 है राइट ऑफ द गवर्नर to send message and address the state legislature. এটা হচ্ছে সিম্পল মেসেজ রাইট টু সেন্ড মেসেজ টু দ হাউস जोटा तुमर कौन प्रेसिडेंट कर 86 रे अच्छी एटा 175 रो गवर्नर अच्छी गवर्नर चाहिए हाउस को राइट्स ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ और हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर तो यहाँ गोटे स्पेशल एड्रेस जोटा प्रेसिडेंट कर 80 केते 86 रे अच्छी आंकर एटा 175 रे अच्छी ठीक अच्छे 175 ठीक अच्छी। नेक्स्ट आसीबा डीएम प्लान है 176 जोटा 87 रो पैरेलल टा 176 एटा स्पेशल एड्रेस स्पेशल बोलसे लिखि दोस टिके देखाउ नथिबो स्पेशल एड्रेस ऑफ द गवर्नर एंड केते बळे स्पेशल एड्रेस करिवे सी स्पेशल एड्रेस टू द हाउस एमती लिखले हबो टू द हाउस और हाउसेस of the state legislature इटा जंती प्रेसिडेंट कर अच्छी 87 रे जे राष्ट्रपति आफ्टर जनरल इलेक्शन फर्स्ट मीटिंग टा एड्रेस करी फर्स्ट मीटिंग पर एड्रेस करिवे तापरे बजट सेशन जो फर्स्ट सेशन आरंभ होला पूर्व से एड्रेस करिवे सेमती गवर्नर भी राज्य विधानसभा बा राज्य रो जो लेजिस्लेचर रो जनरल इलेक्शन पर राज्य विधानसभा जनरल इलेक्शन पर एड्रेस करेंगे थरे एबे जंती हमर जून मासर एड्रेस करथिले गवर्नर एवं प्रति वर्षर प्रथम अधिवेशन आरंभ हेले बजट सेशन होची प्रथम अधिवेशन आरंभ पूर्व एड्रेस कर एड्रेस माने कोन अभिभाषण भाषण दियंती बा कहंती कि सरकार कौन करिवार अच्छी सरकार कर कौन पदक्षेप रही आगु को सरकार आभिमुख्य कौन सरकार कौन तांकर लक्ष्य रखिचंती सब गोटे डिटेल पिक्चर दियंती सी तेनो एड्रेस ऑफ द गवर्नर इज आल्सो a very important part of the parliamentary government that exists at the state level तेणु से गोटे मेजर रोल प्ले करती सी तो यहाँ 176 है स्पेशल एड्रेस एवं गवर्नर एड्रेस करती केबे ना एवरी 5 ईयर आफ्टर जनरल इलेक्शंस जितेबले भी जनरल इलेक्शन हम आ गोटे एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ए ईयर so that is called your governors 176 look at the articles that are both important articles achandi 175 176 ठीक अछि स्पेशल एड्रेस तापर आसीबा हमें आर्टिकल 200 वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 200 एटा होची पावर ऑफ द गवर्नर पावर ऑफ द governor to assent a bill passed by the state legislature एटा हमें कहि परिबा भेटो पावर ऑफ द गवर्नर भेटो पावर ऑफ द गवर्नर जंती राष्ट्रपति ट्रिपल 1 एकर सेंती 200 टा होची गवर्नर रो भेटो पावर एवं सेटा गवर्नर भेटो प्रयोग करंती जेतेबेले गोटे बिल आसे गवर्नर ताकू असेंट दियंती नले विथहोल्ड कर दी पारन जोटा को एब्सोल्यूट भेटो कुआ जे नले ताकू सस्पेंड बा रिटर्न करे दे पारंती फॉर कंसीडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ताकू सस्पेंसिव भेटो कुआ जे तेनु गवर्नर रो भी राष्ट्रपति को बड़ी भेटो पावर रही तेणु सीटा 200 आर्टिकल्स रही 200 है भेटो पावर
एवं एटा आउ गोटे ऑप्शन अछि कोन ना गवर्नर कैन रिजर्व ए बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट किछि बिल जोटा राज्य विधानसभा रे पास हुए सेटा गवर्नर राष्ट्रपति अनुमोदन पई रखि दियंती को बिल जोटा फेडरल नेचर रे थाए बा जोटा सेंटर और स्टेट रो इंटरेस्ट को अफेक्ट करथिबो कि कोनसी अन्य एक स्टेट रो इंटरेस्ट को अफेक्ट करथिबो नले डीपीएसपी ऊपर जदी बिलटा हैतिबो नले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट ऊपर किछि चेंज आनुथिबो ठीक अछि एई सब क्षेत्र रे राष्ट्रपति गवर्नर किछि राज्य बिल को रखंती रिजर्व रखंती कंसीडरेशन पे सेटा को एई आर्टिकल अंडर अछि त माने गवर्नर पाखकु जेतेबेले बिलटा आसे तांका पाखरे पाखापाखि चारोटी ऑप्शन थाए गोटे हला से बिल को असेंट दे परिबे जोटा एक्ट हे जिवो नले ताकू विथहोल्ड कर दे परिबे जोटा रिजेक्ट हे जिवो नले ताकू रिटर्न करई परिबे जोटा सस्पेंसिव भेटो कुआ जे किंतु मने रखा जो मनी बिल को से रिटर्न करि परिबेनी तो सेटा रिटर्न हे परिबनी नो सस्पेंसिव भेटो ऑन मनी बिल्स नले गवर्नर कैन सेंड द बिल टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर कंसीडरेशंस तेन सेटा भी राष्ट्र गवर्नर कर गोटे स्पेशल पावर तेन ताको डिस्क्रिप्शन निया जे कारण तांको मन को जदी आसीबो बिलटा गोटे फेडरल बिल बा सेंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट करूची बा इंटर स्टेट रिलेशन को अफेक्ट करूची ताले गवर्नर से बिलटा राष्ट्रपति को अनुमोदन पई रखि दियंती किंतु पिला माने राष्ट्रपति ताको केते दिन भितर अप्रूव करिवे सेटा मेंशन हेनी कॉन्स्टिट्यूशन रे सेति पय सेटा गोटे कोन मेजर इश्यू ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया एवं सेति पय एमएम पुंची कमिशन रेकमेंड करथिला कि राष्ट्रपति पाखकु राज्यर बिल जेतेबेले पहुंचीबो राष्ट्रपति ताकू 6 मास भितरे अप्रूव करि देले भलो that will be better for the effective center state relation in India. So that has not been done so far, so that is a point to be noted also. ठीक अछि आ गुटे मु देई परिबी जोटा तुम कहूछ आर्टिकल 202 टा भी देई परिबी 202 टा होची बजट स्टेट बजट गवर्नर साल स्टेट बजट गवर्नर साल इंट्रोड्यूस बा मेक इट कोन गवर्नर विल एंश्योर दैट द स्टेट बजट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एटा गोटे गवर्नर कर संवैधानिक कर्तव्य कि सी देखिबे कि राज्यर जो बजट ठीक फाइनेंशियल ईयर सरीबा पूर्वरु रेकमेंड होउची बा सेटा गोटे 202 टा भी तांकर गोटे मेजर रेकमेंडेशंस रहिबो तनु सेटा तांको अंडर आस परिबो 202 आर्टिकल्स ठीक अछि सो दैट इज देयर प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस ठीक अछि तापर आसीबो हमें आर्टिकल 213 power of the governor to issue ordinances when the state legislature is not in session. एटा होची ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग रे एटा रहिछि कि गवर्नर सेति बेले ऑर्डिनेंस जारी करिवे जते बेले राज्य विधानसभा बा राज्यर लेजिस्लेचर सेशन नथिबो एटा गोटे लॉ मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर को कहंती तो आर्टिकल 213 को हमें दीटा भाव रे मन रखिबा गोटे ला ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर ही परिबो नले लॉ मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर भी ताकू कहि थांती तेनो लॉ मेकिंग पावर टा एथरे अछि जेंति आर्टिकल 123 रे राष्ट्रपति लॉ मेकिंग पावर रही सेमती गवर्नर आर्टिकल 213 रे लॉ मेकिंग रही एवं सी ऑर्डिनेंस से विषय रे आनी परिबे जो विषय रे राज्य लेजिस्लेचर लॉ तैयारी करि परिबो ता माने द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज को एक्सटेंसिव with the law making power of the state legislature or law making power सहित समान ओके सो सेटा गोटे मेजर जिंस तापरे आसीबा
article 217, the governor shall be consulted by the state, by the president while appointing the judges of High Court of the state. এটা হলা গভর্নর কর গোটে আর্টিকল স্টেট বলছে দেখো গভর্নর কনসল্ট হেবে যদি যেতবে হাইকোর্টর জজ আপয়েন্টমেন্ট হব গভর্নর কনসল্ট হেবে এবং গভর্নর যে কনসল্টেশনটা কোণ মানে তা মানে নুহ যে গভর্নর ওপিনিয়নটা বাইন্ডিং কারণ জজেস অফ হাইকোর্ট আর আপয়েন্টেড বাই প্রেসিডেন্ট বেসিকালি অন द রেকমেন্ডেशन অফ কলেজিयम जोटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नेतृत्व में कॉलेजियम तैयारी हुए 3 जणिया कॉलेजियम बॉडी गोटे अच्छी किंतु फॉर्मली गवर्नर इज आल्सो कंसल्टेड व्हाइल द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द हाई कोर्ट जजेस सेटा आर्टिकल 217 रो अच्छी ओके तो एटा होची कोन एटा जीवो तापरे 233 la appointment of district judges by the governor in consultation with the high court judges of the district courts বা subordinate courts ro eta roila 233 out article 234 re appointment of judicial persons, judicial officers other than district judges by the governor जो अदर देन जो जुडिशियल ऑफिसर गुरा सब जुडिशियल ऑफिसर्स माने जो रही आमर जमी राज्य में ओजेएस अच्छी ओडिशा जुडिशियल सर्विस रे जो मान जॉइन करेंगे से माने गवर्नर द्वारा अपॉइंटमेंट हेबे एवं इन कंसल्टेशन विथ द हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन एथरे दी जण कंसल्ट करा जाय तो 233 और 234 रे डिस्ट्रिक्ट जजेस मानकर अपॉइंटमेंट कथा कहैछि एवं ठीक अछि बाकी पिलाने 163 जो अच्छी आर्टिकल 163 टा भी गवर्नर को द्वारा जीव 163 रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर तो एटा भी जीवो 163 टा भी आर्टिकल्स टा जीवो तो 163 टा देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर एटा जीवो तापरे 163 जीवो 164 भी जीवो 164 भी जीवो आर्टिकल 164 भी जीवो अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर एटा जीवो appointment of the CM and other ministers by the governor eta jibo and article 165 bi jibo appointment of advocate general by the governor एटा जीवो ए दुटा आर्टिकल भी जीवो भल से देखो 164 जीवो 165 जीवो ओके
आउ एटा 166 टा भी 166 बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस माने काम बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जीवो that will be decided finally approved by the state government by the governor. The conduct of business shall be the rules and regulations. जो rules and regulation रे राज्य सरकार चलिबे सेटा गवर्नर अप्रूव करंती तो सेटा आसीबो 166 टा नै कि 166 टा आसी परिबो. So these are the basically the useful articles of the governors that we have studied. एवं आ गुटे तुम नै परिबो 167 duties of the CM towards the governor. ड्यूटीज ऑफ द सीएम टुवर्ड्स गवर्नर गवर्नर को पई मुख्यमंत्री कोन कर्तव्य रही जोटा आर्टिकल 78 रे अछि प्रधानमंत्री दायित्व राष्ट्रपति पति 167 टा होछि प्रिंसिपल लिंक बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स एंड गवर्नर. then these are the useful articles these are the useful articles that we have come to know. तेणु आम देखिले गवर्नर कर केते सारा आर्टिकल्स रही ठीक अच्छी यूजफुल हम तुम किसी भलसे देख टिके तुम्हें खाली जदि सेटा पाठ पढ़ार ऑब्जेक्टिव रखीच से वीडियो गुरा मोर देख टिके तो से बहुत सारा इंपोर्टेंट लेसन गुरा आम नहीं कि आसु जिते सारा मु ओपीएससी प्लेटफॉर्म रे जति सारा तुम कले कौन वीडियो से सब बेसिकली वाइटल वीडियोस जो एरिया पर तुम डाउट आसे तो को एरिया पर तुम आउरी रहुची इश्यू सेटा तुम कमेंट रे लिखिले सेटा मु निश्चित भाव में से क्लास पे व्यवस्था करी ठीक अच्छे. तेणु भलसे पढ़ एवं आज जो सेशन रहा से बेसिक आर्टिकल्स गुरा रखिले तेणु बेसिक आर्टिकल्स ऑफ द गवर्नर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रिलिम एग्जामिनेशंस बट ऑल्सो फॉर मेन्स एग्जामिनेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट थाए. तेणु आर्टिकल गुरा प्रोवाइड कले आमर लेखा रुचि संपन्न हुए एवं सेटा बेसी मीनिंगफुल हुए लेखाटा. तो ऑलवेज नॉट डू नॉट इग्नोर आर्टिकल्स जदियो से माने एते नेसेसरी नुह जे आमे न देले आंसर ठीक हेबनी सेमती कहि हेबनी किंतु देले सेटा गोटे पॉजिटिव फैक्टर हिसाब रे काम करे. तेणु आर्टिकल गुरा दरकार जदि तुम बेसिकली सिविल पे प्रिपेयर होउछ बा सिविल सर्विस पे एस्पिरेशन रखिछ तो बिगिनिंग रो आर्टिकल गुरा बारंबार सुनिले बारंबार देखिले बारंबार ताकू प्रैक्टिस कले सेटा मन रहिबो कारण एटा इट कैन नॉट बी रिमेम्बर्ड ओवरनाइट. तेणु एटा गोटे रात माने हठात तुम ताकू घोषिले मन रहिबोनी एंड सेटा घोषिले भी टोटल मन रहिबोनी. तो आर्टिकल पे ओरिड होनी विभिन्न प्रकार क्लास गुरा देख एवं विभिन्न सब सेशन रोचे मु समस्त आर्टिकल ऊपर नहीं कि आसबि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स गुरा तो सेगुरा तुम देखिले बारंबार एवं तापर टिके सुनिले जो क्लास गुरा टिके सुनिले सेटा आराम से मन मन धीरे धीरे मन रही ठीक अच्छे. तेणु आर्टिकल प्रैक्टिस कर कारण सिविल बहुत आर्टिकल आवश्यकता रही मेन्स राइटिंग रे आर्टिकल प्रोवाइड करिया कथा कारण जहाँ भी पढ़ो से आर्टिकल जहाँ थी तो लिखा कथा. प्रिलिम रे तो क्वेश्चन आसे बहुत सारा आर्टिकल क्वेश्चन आसूची अन्य एग्जाम रे भी मुझे देखुची एसएससी पीएसएससी एग्जाम रे भी बहुत सारा आर्टिकल्स आसूची. तेणु आर्टिकल से आर्टिकल रिलेटेड अच्छी पे आउ थे कहीदे कि शनिवार दिन जो माराथन हम 3टार आरंभ बोधे से यूट्यूब रे जन दिज्व तुमको बिफोर हैंड तो अड्डा 247 ओपीएससी को सब्सक्राइब तो करिथिबो से तुम देखिपर न सब्सक्राइब करते तो सब्सक्राइब कर दियो ठीक अच्छे. बाकी जो रही आमर माराथन्स तापर आम प्रिलिम परे जो मेन्स पई डिफरेंट सेशन सब आरंभ करूँ बहुत सारा कोर्स आरंभ हम मेन्स पई स्पेशल आरंभ हम जीएस पेपर 2 आंसर राइटिंग क्लास इंग्लिश क्लास एसे क्लास और जनरल इंग्लिश क्लास हम ज्योग्राफी उपरे भी रहिबो इकोनॉमी उपरे भी रहिबो एवं तापर इंडिविजुअल बैचेस गुरा लॉन्च हम सब पॉलिटी बैच फॉर प्रिलिम एग्जामिनेशंस पॉलिटी बैच फॉर मेंस एग्जामिनेशंस जनरल इंग्लिश बैच ओडिशा हिस्ट्री बैच एंड सब डिफरेंट बैच अति कम प्राइस रे अड्डा 247 रो प्लेटफॉर्म रे लॉन्च हम इफेक्टिव कोचिंग सेम कोचिंग बट एट ए वेरी क्वाइट वेरी नॉमिनल प्राइस.
तेणु सेटा तुम गोटे अपॉर्चुनिटी सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी जॉइन अड्डा 247 कोर्सेस बाय डाउनलोडिंग द अड्डा ऐप जोरा सब डाउनलोड करके रख अड्डा ऐप रे बहुत सारा स्टोर रे तुम देखि परिबो बहुत सारा जिंस अच्छी ठीक अच्छी तो यहाँ तो तुमको बहुत थर भी कही मु जो फाउंडेशन बैच कंटिन्यू कर सेकेंड बैच लॉन्च हम तार सेकेंड बैच लॉन्च हो प्रिलिम पर तेणु तार मूलू सब पीडीएफ तेणु तुम फाउंडेशन बैच रे जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छे जॉइन कर बाकी मोर कोड अच्छी Y963 तुम जेकोसी जहाँ भी कोर्स किणव पेड क्लास हो वीडियो क्लास हो जदि मोर Y963 यूज करिवो जदि टेस्ट सीरीज किनथबो ताले ओडे एस ऐड करिवो ताले तुमे कंसेशन भी पाइबो बहुत सारा ठीक अछि तो जॉइन मी एवरी डे ऑन एट 5 PM on YouTube and join my classes paid classes if you are interested in ठीक अछि thank you very much for giving me such a huge support and you are standing by me so believe in the believe in the lecture not the lecturers तुम्हें पाठ देखिकी से अनुसार कोर्स जॉइन करो कि पढ़ू दैट डजंट मैटर यू हैव टू फोकस ऑन द लेसन द टीचिंग प्रोसेस द मेथोडोलॉजी द ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा दैट इज एसेंशियल नॉट द एंटरटेनमेंट साइड ऑफ द थिंग्स एंटरटेनमेंट यू कैन गेट ऑन यूट्यूब ऑन डिफरेंट सिनेमास ऑन अन्य वीडियो देखि परियो सो पाठ रे एंटरटेनमेंट रो किछि चांस नाही ठीक अच्छे पाठ माने प्योरली एजुकेशनल वीडियोस सो ये जो एजुकेशनल वीडियो हम अड्डा 247 लॉन्च करूछु ता विषय तुम कौन मतामत अच्छी केमती कले आउरी तुम बेसी उपयोगी हो पार ता विषय तुम कमेंट रे लिख से अनुसार मुझे काम करी ठीक अच्छे पिलाने थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी एंड वाचिंग माय वीडियो थैंक यू।